Good morning, everyone. Welcome to the morning phone call. We start with technical and derivatives outlook. So we start with Nifty. So yesterday we saw that Nifty was up by 60 points. Nifty has almost closed at 18,593, and yesterday it was a gap up opening, and Nifty made a high of 18,640. So somehow there was a profit booking during the day, which dragged the index lower. And net it was a positive close, but the candlestick pattern was bearish. So we witnessed selling pressure in from the day's high. So I believe that this Nifty is going to trade in the range of 18,800 and 18,400 for the next couple of days. Whenever there's a decline, we should use this decline as a buying opportunity, because somehow we feel that during the month of June, we are going to see a new all-time high levels, and 19,000, 19,200 are most likely on the charts. So the bias is positive. Even today, whatever the decline, 20, 25 point, 30 point decline during the day, Nifty can be viewed as a buying opportunity. So bias is positive, decline. Maximum correction which may see during the day is the 18,500 level. Same with the Bank Nifty. Bank Nifty was up by 160 points during the yesterday's opening. It made a high of 44,266 and the close was 44,100. Nifty is trading above 44,000, so that is a sign of strength. The stocks like Axis Bank, IndusInd Bank, and ICICI Bank were the one which pulled the Nifty on the highest, Bank Nifty on the highest side, whereas on the negative note, EU Bank and Kotak Bank and PNB has closed in the red. So Nifty, Bank Nifty, we are having a positive view. But having said this, the previous week low, which was at 43,706 level, needs to be watched very carefully. By any chance, if those levels are broken, then there can be some loss of momentum, and maybe another 500,000 odd points correction can be there. So slightly cautious view for the Bank Nifty. More or less, this week is like to be in range bound, is what I believe. Sector specific, yesterday auto was something which saw a very good momentum. M&M, Ashok, and Maruti were the stocks which perform in the auto space. And private banks, Axis Bank, IndusInd Bank, and ICICI Bank were the top leaders. Z, we are see some amount of bounce in Z. I think even Z can see some trading bounce for the next 1 or 2 trading session. Selling was seen in FMCG, Nestle India, Dabur, and ITC. Some profit booking was seen in this counter. So maybe another couple of days there can be slight selling pressure maybe seen in this counter. Defense stocks were trading near all-time high. Mazagon Dock, HAL, and BDL. So defense stocks will be the flavor. So specifically from the report specific, I think today SBI Life is one stock which we need to keep a watch on it. So that will be one. And now coming to the derivatives report, see Nifty futures has seen a long build up to the tune of 0.77%, and even the put call ratio has now climbed from 0.95 to 1 ratio. So this is trend. Major call additions were seen in 18,600 and 18,700 strike price. So this will act as a resistance. Whereas on the put front, 18,500 and 18,600. So this will be the support. Bank Nifty has also seen a uptick. The put call ratio has gained from 0.8 to 0.87, so slight strength. There was a long build up in Bank Nifty to the tune of 3.85%, and the major call option addition in call option was seen at 44,000 strike price. So this is the same with the put option also 44,000. So the same 44,000 is acting as main support, strong support levels. We are having a call in this derivatives report. This is a positional call. We are looking at the JSW Steel June future. We are recommending a buy in the range of 716 to 718. The stop loss would be 707, below 707, and the price target is 740. So this would be that kind of a positional call for the next couple of days on the JSW June future. So net, the index wise, it's a range bound kind of a market from the Nifty and Bank Nifty point of view. Individual stocks are likely to outperform, and JSW still remain the pick of the day. So that's all from mine. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you.
Thank you, Brijesh sir. Good morning all. A few fundamental updates from my end. First on IT sector. Overall, there is a global player called EPAM. So EPAM has revised its guidance lower for the quarter and the full year. So this is the second time in past 30 days that the ER&D player has revised its guidance lower. Considering EPAM is a global E&D player and has, cited that their clients are cautious, it might have a repercussions on Indian ER&D players like KPIT, Tata Elxsi, and LTTS. And since they have also run up, one needs to be cautious on the ER&D players like KPIT, Tata Elxsi, and LTTS. Second is on TCS. So TCS has backed a 10-year deal from UK Teachers Pension. So the deal is over 10 years and has a deal value of 250 to 300 million as per media sources. Although the deal will not materially contribute to the top line, the company is winning series of such large deals, which bodes well for the company. In terms of Wipro has also won a deal from Bowling Center TV. So the deal win is for more than 13,000 TVs, and it bodes well for Wipro. Secondly, Wipro has given a guidance that from the current $11 billion of revenue, they will achieve $15 billion. However, the time frame is not given, and the company is saying that they will build this revenue through acquiring lots of smaller clients. This commentary was given by previous CEO also, that by 2020 they will achieve $15 billion, but it is yet to be seen. So we would take this guidance as a pinch of with a pinch of salt, and Wipro currently is also not doing well because their clients are not doing well. So one needs to be cautious over there. Secondly, on FADA. So FADA has released its retail sales. So the major highlight was that the retail sales growth is just 4.3% YOY compared to wholesale sales, which is 14%. This indicates that there is clearly inventory pileup, uh, and the inventory days has also gone up to 45 days from 37 days, and hence dealers have requested to moderate their supplies. uh, One of the key thing was that EV sales, which contribute 7%, has grown, and CVs and PVs both in their markets in EV have also grown. So that on that basis, we are positive on M&M, Bajaj Auto, and Eicher. In terms of Adani Group, the group has made a prepayment of margin-linked shares backed financing totaling to around $2.15 billion. The promoters have also prepaid 700 million debt taken for Ambuja acquisitions, and the cash balance is also healthy, which is up 41.5% to 4.75 billion, which is 40,000 crores. So this is a positive news for the group overall. In terms of airlines, so the aviation minister Jyotiraditya Scindia has expressed concern over abnormal surges in airfare on certain routes following the grounding of Go First. So airlines are expected to self-monitor the issue. So this reduction in fare will not bode well for airlines overall. In terms of Mahindra and Mahindra, Sunrise Initiatives have sold its entire stake of 81.58% in Mahindra Marine to Ocean Blue Voting, and now it is 100% owned by Ocean Blue. In terms of SBI cards and payment, board has approved a fundraising of 3,000 crores through NCDs in one or more tranches on private placement. In Bharti Airtel, Special Committee of Directors for Fundraising has approved allotment of 21.01 lakh shares at the face value of 5, and the conversion price is 521 to foreign currency convertible bonds. In terms of Indian Energy Exchange, the company has reported 8,251 MU. Overall volume in May, a gain of 8% YOY. The market clearing price declined 30% YOY. Power demand is expected to increase in coming months, and supply side liquidity may improve due to enhanced coal supply and reduction in e-auction coal prices.
and declining imported coal and gas prices. This will lead to competitive pricing and higher clearance for discoms and open access consumers. Lastly, on JK Cement, so the company has agreed to sign and execute a share purchase agreement to buy 100% in Toshali Cement for 157 crores in cash. The acquisition will help the company in expanding its footprints into eastern region, and it bodes well for JK Cement. That's it from my end. Over to you, Shantanu. Yeah, thank you, sir. So the first news from my side is about Godrej Consumer Products, where the board of directors has appointed Mr. Asif Malbari as the chief financial officer of the FMCG company with effect from 10th August 2023. Mr. Samir Shah ceased as the CFO of the company as he will move to a group role leading consumer investments. The next news is about Wipro, where the company has announced June 16th as the record date for the buyback of its shares worth rupees 12,000 crores. This will be Wipro's fifth buyback in the history. The buyback has been approved for a minimum price of rupees 445 per share, which is roughly 10% higher than its current price of rupees 405. The size of the buyback offer is 4.91% to the total equity shares, which is good enough to get a decent acceptance ratio in the retail category. The next news is about Indian Energy Exchange, where the Energy Exchange achieved 8,251 MU overall volume in the month of May, increasing 8% over the year ago month. The price in May 2023 was rupees 4.74 per unit, declining 30% from rupees 6.76 per unit in May 2022 due to an improving supply side scenario leading to increased liquidity as well as cooler weather conditions. State Bank of India, the country's largest lender, said that the board of directors will meet on June 9th to consider raising funds during FY 2024 via the issuance of debt instruments, including capital instruments in INR and or foreign currency on a private placement basis. L&T Financial Holdings, the board meeting will be held on 8th of June to consider the final dividend for the financial year 2022-23. Coming to Chalet Hotels, where the company has launched its second hotel in Hyderabad, in the Western Hyderabad High-Tech City. The addition of this 168 key property takes a total number of rooms under the company's portfolio to 2,802 keys, including its subsidiaries. The next news is about Bank of Baroda, where the company has invited bids from buyers for its stake in the National Stock Exchange through an exchange filing on Monday. The state-run bank has proposed an auction to sell its stake in the exchange at a floor price of rupees 3,150 per share that values NSE at rupees 1,56,000 crores, which is way more than its rival BSE's valuation of rupees 7,790 crores. It has invited offers from eligible categories like insurance companies, corporates, mutual funds, high net worth individuals, foreign institutional investors, and non resident Indians to bid for 21 lakh shares or a 0.442% stake in the exchange for at least rupees 3,150 per share. This will take the deal value to rupees 661.5 crores. Coal India, the government has mopped up rupees 4,185 crore through a 3% stake sale in the state-run Coal India. The holding of the government has come down to 63.13% in the company after the offer for sale. As per the Department of Investment and Public Asset Management, government has received rupees 4,185 crores through the 3% stake sale in the company. The issue was oversubscribed by both retail and institutional investors. The full year target from the disinvestment has been pegged at rupees 51,000 crores. The next news is about Tata Power, a subsidiary of Tata Power T
TPREL is one of the major renewable energy players in the country. The company has commissioned a 110 megawatt solar power project in Bikaner, Rajasthan. The project will supply 110 megawatt green power to the Kerala State Electricity Board. The project is expected to generate approximately 211 million units of green electricity and reduce 258,257 metric ton carbon footprint annually. Finally, coming to some news related to the tea industry. Tea production in calendar year 2022 increased to 1,365 million kgs, which is slightly higher than the previous year, which stood at 1,330 million kgs in 2021. As per the latest data of the tea board, production at the North India gardens stood at 1,133.35 million kgs, while it was 231.99 million kgs in South India. For the first 3 months of year 2023, that is from the Jan to March period, production volumes stood at 79 million kgs. The data for April 2023 released by the board shows that the production has dipped to 82.77 million kgs as compared to 93.25 million kgs in the same month last year. Meanwhile, tea growers have expressed serious concern over the challenges faced by the industry in the current season. The apex body of Planters Tea Association of India said that adverse climate conditions, subdued export, and domestic demand are the causes of concern for the industry at the moment. So this was all from my side. Now handing it over to Kshitija ma'am. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक और को एक बार रिव्यू कर लेते हैं. फर्स्ट अपडेट जो है आईटी सेक्टर के ऊपर है. ईपीए में उन्होंने रिवाइज किया क्वार्टर और फुल ईयर का जो रेवेन्यू आउटलुक है आईटी सेक्टर का, और ये सेकंड टाइम उनका साइटिंग कॉशियसनेस है बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ क्लाइंट्स के कारण. और ईपीए में एक ग्लोबल और ईआरडी प्लेयर है, और उसका जो रिपरकशन है इंडिया में ईआरडी प्लेस का, तो उसमें ईआरडी प्लेस में केपीआईटी, टाटा एलिक्स और एलटीटीएस आता है. देन नेक्स्ट अपडेट है डीसीएस के ऊपर. डीसीएस को 10 ईयर का डील मिला है यूके टीचर्स पेंशन से. ये डील 10 ईयर का होगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो यूएस टर्म्स में $250 से लेके 300 मिलियन है. ये मीडिया के सोर्स के अनुसार है. ऑल्दो ये जो डील है वो कंट्रीब्यूट ज्यादा टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी के इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बट इसकी जो विनिंग सीरीज है वो लार्ज डील का ये अच्छा है कंपनी के लिए. देन नेक्स्ट अपडेट है विप्रो के ऊपर. विप्रो को एक डील मिली है बोलिंग सेंटर टीवी से, जो डिजिटल आउट ऑफ होम टीवी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर है बोलिंग सेंटर्स यूएसए में, और मोर देन 13,000 टीवी से जो विप्रो के सोल्यूशन होंगे, और इसका जो एड रहेगा वो इम्प्रूव होगा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑडियंस के साथ. और विप्रो का जो टारगेट रहेगा वो एनुअल रेवेन्यू है करंट लेवल से वो ग्रो करने का $11 बिलियन से $15 बिलियन, और कंपनी का फोकस रहेगा स्मॉलर क्लाइंट्स है जहाँ से लॉन्ग टर्म रेवेन्यू बिल्ड करेंगे बाय ये जो माइनिंग जिस मतलब क्लाइंट्स के साथ. और कंपनी ने स्टेट किया है कि वो स्टार्ट करेंगे बिलिंग क्लाइंट जस्ट 3 लाख से $5 लाख के ईयर. जो एबिलिटी है उनमें ग्रो करने की ये नंबर्स को $10 मिलियन और रेवेन्यू पर ईयर 3 to 5 years टाइम्स में, और ये टू डेवलपमेंट कंपनी के लिए अच्छी है. देन नेक्स्ट अपडेट है पाड़ा का जो मई 23 का आउटलुक आया था वो पॉजिटिव था एमएनएम, आइशर मोटर और बजाज ऑटो के लिए. पाड़ा ने रिटेल सेल्स कल रिलीज किए. उसमें 2 मेजर हाइलाइट्स रिपोर्ट है कि पीवी सेगमेंट का जो रिटेल सेल्स ग्रोथ है वो 4.3% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर. वो मतलब फार लोअर देन जो होलसेल ग्रोथ था 14% ईयर ऑन ईयर कंपनी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें. और उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि इन्वेंट्री पाइलिंग अप के कारण डीलर्स जो इन्वेंट्री डेज जो है वो गॉन अप हुआ है 45 डेज मई मंथ में, और कंपेयर करेंगे मार्च में तो वो 37 डेज था. डीलर्स का रिक्वेस्टेड है कि मैन्युफैक्चरर्स को वो मॉडरेट करें उनका सप्लाई जून में, और जुलाई और अगस्त में रिलेटिवली वीकर मंथ्स हो गए सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से. देन ईवी सेक्टर अकाउंट रिपोर्ट किया 8% टोटल रिटेल सेल्स का, और ये जो ग्रोथ है वो कंट्रीब्यूट करती है 0.5% and 2.5%, and overall 7% EV sales है, और
सीवीएलएस का जो ईवी है वो ऑलमोस्ट अकाउंटेड कंपनी ने मतलब रिपोर्ट किया है फाडा ने 56% का टोटल सेल्स है। सीवीओ जो पैसेंजर व्हीकल्स है उनका जो मार्क है ईवी मार्केट में वो कंट्रीब्यूट करते 0.5% और 2.5%। देन टू व्हीलर एंड सीवी सेगमेंट 10% से अप है, ट्रैक्टर है वो 7% से अप है। थ्री व्हीलर सेगमेंट सिग्निफिकेंटली ग्रोथ देखी गई है 79% की ईयर ऑन ईयर। और इसमें जो टॉपिक है हमारे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से एमएनएम है, बजाज ऑटो है, आयशर मोटर है। देन नेक्स्ट अपडेट है अदानी ग्रुप के ऊपर। ग्रुप का जो प्रीपेमेंट मार्जिन किंग था वो बैकिंग फाइनेंशियल टोटल था उसका $2.15 बिलियन। प्रमोटर्स ने प्रीपेड किया है 700 मिलियन और $700 मिलियन डेप्ट जो अंबुजा सीमेंट का एक्विजिशन के टाइम पे किया था। और कैश बैलेंस है लिस्टेड पोर्टफोलियो वो अप है 41.5% से ईयर ऑन ईयर टू $4.75 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23 में। देन नेक्स्ट अपडेट है एयरलाइंस के ऊपर। एविएशन मिनिस्ट्री है ज्योति आदित्य सिन्हा, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि कंसर्न कि अबनॉर्मल सर्ज एयरफेयर्स जो सर्टन रूट्स पे है वो ग्राउंडिंग होता है गो फर्स्ट और टोटल एयरलाइंस का जो मतलब ओवरऑल एयरलाइंस का जो एक्सप्रेस है वो रीजनेबल होना चाहिए। और एयरलाइंस को सेल्फ मॉनिटर का जो इशू है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड ये इशू है वो इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग मीटिंग में एयरलाइंस के जो एग्जीक्यूटिव थे उनको बोला था। और ये शाह प्राइस जो स्पॉट फेयर में है फास्ट व्यू में उसमें ऊपर डिस्कशन हुआ था। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उनका जो सनराइज इनिशिएटिव सेल्स है उसका जो एंटायर सेक्स है 81.58 महिंद्रा मरीन टू ओशन व्यू फ्लोटिंग को सेल किया है। और ये ओशन व्यू करंटली होल्ड करती है बैलेंस 18.42 स्टेक महिंद्रा मरीन में। देन नेक्स्ट अपडेट है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के ऊपर। बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो रेज करेंगे फंड 3000 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडी से। और वन मोर टैंक है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस का। ये भारतीय एयरटेल है स्पेशल कमेटी डायरेक्टर्स है, उन्होंने भी फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दिया है। और जो अलॉटमेंट होगी 21.01 लाख इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू ₹5 ईच। कन्वर्जन प्राइस जो है 521 टू होल्डर्स का जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है उस हिसाब से। देन आईएस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी ने रिपोर्ट किया 8251 MU ओवरऑल वॉल्यूम मई मंथ में जो गेन है 8% ईयर ऑन ईयर। मार्केट क्लियरिंग प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है 30% ईयर ऑन ईयर से 2.74 पर यूनिट। पावर की जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज करेंगी कमिंग मंथ में। और सप्लाई साइड लिक्विडिटी है वो मई मंथ में इम्प्रूव हुई है क्योंकि कोल जो सप्लाई था वो इनहांस हुआ था और रिडक्शन ई ऑक्शन कोल प्राइसेस में हुआ था। और डिक्लाइन इम्पोर्ट जो मतलब इम्पोर्ट कोल एंड गैस प्राइस में उसमें डिक्लाइन दिखी गई उसके कारण। ये एक बेसिकली लीड करता है कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड हायर क्लियरेंस फॉर डिस्कॉम्स एंड ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स के लिए। देन जेके सीमेंट है, कंपनी ने अग्री किया है कि वो साइन एंड एग्जीक्यूटिव करेंगे शेयर परचेस एग्रीमेंट जो बाय करेंगे 100% स्टेक तोशिल सीमेंट्स में। और उसका जो वैल्यू है वो 157 करोड़ है इन कैश में। एक्विजिशन हेल्प करेगा कंपनी को एक्सपांड करने को उनका जो फुटप्रिंट है ईस्टर्न रीजन में। देन नेक्स्ट अपडेट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने अपॉइंट किया है आसिफ मलबारी उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एफएमसीजी कंपनी का। और ये इफेक्टिव होगा August 10, 2023 से। और समीर शाह को एज ए सीएफओ कंपनी का अपॉइंट किया है और वो मूव करेंगे ग्रुप रोल लीडिंग कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट का। और देन नेक्स्ट अपडेट है विप्रो के ऊपर। कंपनी ने अनाउंस किया जून 16 को जो रिकॉर्ड डेट है बायबैक की और जो उसकी जो शेयर्स वर्थ है वो 12,000 करोड़ है। और ये बायबैक है वो फिफ्थ बायबैक है अभी तक का हिस्ट्री में। और ये बायबैक जो है वो अप्रूव हुआ है मिनिमम प्राइस 445 पर शेयर में और रफली 10% हायर उसके करंट प्राइस से। अभी जो करंट प्राइस है वो 405 है। साइज से बायबैक की ऑफर करती है 4.91% टोटल इक्विटी शेयर्स और जो गुड इनफ है डिसेंट एक्सेप्टेंस जो रेशियो रिटेल कैटेगरी के लिए उसके लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है स्टेट बैंक के ऊपर। स्टेट बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो 9 जून को उनका मीटअप है जो फंड रेज करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24 में उसके लिए। और ये बेसिकली फंड रेज होगा इश्यूएंस ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें। और ये इंडियन रुपीज में भी होगा फॉरेन करेंसी में भी होगा ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। देन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है उनकी भी कंपनी की मीटिंग है जून 8 को जो कंसिडर करेंगे फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का।
देन शाले होटल है, कंपनी ने लॉन्च किया उनका सेकंड होटल हैदराबाद में, वेस्टर्न हैदराबाद हाइट सिटी, जो एडिशन उनका 168 की प्रॉपर्टी है, जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स है उसमें, और कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो अभी 2802 कीज है इंक्लूडिंग सब्सिडरीज। देन नेक्स्ट अपडेट है, कोल इंडिया गवर्नमेंट ने मॉक किया है कि 4185 करोड़ 3% स्टेक सेल करेंगे स्ट्रेट रन कोल इंडिया से, और ये होल्डिंग गवर्नमेंट का जो है वो कम डाउन आए होगा इसके बाद 63.13%, और ये ऑफर फॉर सेल के लिए होगा। और एज पर जो डिपार्टमेंट है इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का, वो गवर्नमेंट रिसीव करेंगी 4185 करोड़ 3% स्टेक सेल यहाँ से, और ये बेसिकली इशू होने के बाद ओवर सब्सक्राइब होगा बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर और टीपीआरईएल है वन ऑफ द मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स है कंट्री में। तो बेसिकली टीपीआरईएल है वो कमीशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे 110 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बीकानेर राजस्थान में, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली सप्लाई करेगा 100 मेगावाट ग्रीन पावर टू केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 211 मिलियन यूनिट्स ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, और रिड्यूस करेंगे 2,58,257 मेट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट एनुअली। देन नेक्स्ट लास्ट अपडेट है टी इंडस्ट्री के ऊपर। टी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन कैलेंडर था 2022 का इंक्रीज हुआ है 1365 मिलियन केजीज, जो स्लाइटली हायर है प्रीवियस ईयर से, और अभी है वो जो लास्ट टाइम था 1330 मिलियन केजी 2021 में। एज पर का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें टी बोर्ड प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया का जो गार्डन्स का है वो भी 1133.35 मिलियन है, और 231.99 मिलियन किलोग्राम साउथ इंडिया से है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.